Hi friends, good evening guys. Let me check whether my voice is audible guys. I am also switching on my mobile. Is my voice audible? Yeah, I am able to hear my voice. Hi Rajesh, hi Harshita. I think the problem is still continuing, I guess. It's looking blur. Good evening Harshita. Yeah, yeah Rajesh. Okay. So we'll wait for a minute guys. Again I'm raising the issue. So let us see like whether it gets resolved or not. Is it now clear? No, again it has become blur, I guess. Yeah, Rajesh, correct. So let's see. I think yesterday also after 15-20 minutes again it became proper, right? तो आज भी हम try करेंगे. We will see now whether it becomes the same thing. Okay. चलो guys, let me ask you. तो कल का class whether everyone has discussed that, everyone has revised whatever we have discussed. हमने जो भी डिस्कस किए थे कल के क्लास में. So did you revise that part? Rajesh says yes. Okay, good Rajesh. Harshita also yes sir. Okay.
Is it fine? Okay. Am I clear now, guys? It's still blur. Is my voice audible? I feel that's the doubt because I think my video has been struck, I guess. Please have a check with that. Okay, guys, my video, I think it's got struck. No, I think the screen wise it is good, Rajesh, I guess. My only doubt is my video, I think it has become stagnant, right? My video, I think it is not moving. My video is stagnant, which I can see here. And my voice also, I think, I don't know whether it is getting reached or is there any disturbance in that. Yeah, Rajesh, my video has become stagnant. Only video problem. Okay. So what shall we do, guys?
Okay, so shall we continue or like how do we go about this? क्या करेंगे दोस्तों? So what shall we do? So Rajesh, my voice is clear, right? My voice is clear, Rajesh. Okay, chalo Harshita. We will continue then. Your voice is clear. Okay, chalo, no problem. See, now we will complete the MCQs, guys. So I will read those MCQs. I think because it is bit blur, or shall we take up directly the yesterday's discussion part? So we have done, I think, essay 230 we have done, right? Yeah, chalo. So we will take up essay 240 then, because MCQs I wanted to discuss, but I think the screen is blur, I guess. तो क्या करेंगे थोड़ा, we will take up essay 240 then. Is it fine, everyone? Okay, chalo, no problem then. Okay, so chalo, so we will take up, so you can write down this first heading, guys. So I will dictate the heading. Okay. So auditors responsibilities. Okay, kindly note down auditors responsibilities in relation to fraud. Auditors responsibilities in relation to fraud in an audit of financial statements. Auditors responsibilities in relation to fraud in an audit of financial statements. Okay, now let's understand this. Now what is fraud? Fraud matlab kya hai, guys?
व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड मतलब क्या है? सो फ्रॉड नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में अगर किसी ने पूछा है तो नॉर्मली व्हाट इट रेफर्स टू इंटेंशनल एक्ट. फ्रॉड मतलब हमेशा क्या रहता है? इंटेंशनल एक्ट रहता है, राइट? बट इन एग्जाम यू कैन नॉट राइट दिस, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट? सो इन दिस केस फ्रॉड मतलब क्या है? सी, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. फ्रॉड मीन्स इट इज एन intentional act. Let me tell you very clearly, guys, it is an intentional act. Fraud means it's an intentional act which is done by whom? Now get the next question. So ask yourself the next question. Intentional act done by whom? Done by management, employees, or others. It is an intentional act which is done by whom? Done by management, employees, or others. Sir, how they are doing it? They are doing it by a technique known as deception. They are doing it by technique known as deception. Okay, what is deception? Deception matlab cheating. Okay, deception matlab cheating. So it's an intentional act which is done by whom? Management, employees, or others, by using a technique known as deception. Okay, why they are doing all this? To gain illegal advantage over the assets of the entity. To gain illegal advantage over the assets of the entity. Okay, so this is what you have to know. That is nothing but fraud. So again I am repeating this, guys. Fraud matlab kya hai? It is nothing but an intentional act. Intentional act matlab, in short अगर मेरे को बोलना है तो mind is the culprit. Okay, intentional act is nothing but mind is the culprit. It's an intentional act which is done by whom? Which is done by management, employees, or others. Okay, management हो सकता है, employees हो सकता है, others भी हो सकता है. Who is normally included in others? Others में कौन है सर? Others में normally board of directors आ सकते हैं, third parties company के ऊपर fraud करे होंगे. Okay, so it might be that particular case as well. Okay, so it's an intentional act. That is correct. मतलब there is some intention to basically do some wrongdoing, है ना? तो intentional act which is done by whom? Now the moment you ask a question, you will understand it is done by management, employees, or others, by using what? A technique known as deception. मतलब you are cheating somebody and doing the fraud. And for what purpose you are doing the fraud? To gain illegal advantage over the assets of the entity, है ना? तो illegal advantage over the assets of the entity के लिए you are doing the fraud. तो fraud मतलब in short क्या है sir? This is the entire definition you have to remember. See, if it is legally advantage, then fraud करने की क्या जरूरत है? I hope you're understanding this. If there is a legal benefit available, then there is no intention to do the fraud, है ना? तो fraud मतलब क्या है? It's an intentional act. No worries at all. But it is done by whom? Management, employees, या others हो सकता है. How they are doing it? By using a technique known as a deception. Deception मतलब cheating. Why they are doing all this? To gain illegal advantage over the assets of the entity. Clear है बात सबको? So all this you have to take into consideration. Understood everyone? Okay, guys, is it clear? So you can make a note of this first. Okay, first you can make a note of this, guys.
So after you note down, let me know, then I will move forward. Okay. Now I think my video is moving in my screen. Okay, I think some technical issues might be there, I guess. So sometimes it is getting stuck, sometimes it's moving, etc. Anyways, let's focus on the content, guys. Yeah, for me, Harshita, I think in my mobile actually it's moving. So some technical issues might be there. Chalo, no problem. Okay, have you written that, everyone? Have you written? If yes, let me know, guys. Okay, chalo, no problem. See, now let's understand very clearly, guys. Essay 240 talks about what? Essay 240 talks only about the fraud. मैं वो note भी लिख रहा हूँ मैं. Then you can copy it. Okay, essay 240. Okay, discusses only about frauds. Okay, it will not discuss with respect to errors. Let us be very clear on this. Okay, essay 240, see, it's something like this, guys. Okay, see, we say normally misstatement है ना. What is this misstatement? Misstatement matlab wrong statement. Misstatement matlab wrong statement. Wrong statement क्यों आया है sir? Because of fraud या फिर because of error. Misstatement मतलब wrong statement. Why wrong statement has come? Because of fraud या error. Okay, but remember, guys, in case of essay 240, okay, it deals with misstatement of only fraud. So error it will not consider. Please understand this very clearly. Okay, so this is very important to be remembered. Okay, so misstatement, remember this particular point, guys, very clearly. So essay 240 talks misstatement, no doubt in this, but only of fraud. Okay, it does not talk about error. ठीक है बात सबको? Okay, as simple as is, that is what you have to take into consideration. Clear, everyone? Okay, so this is one aspect which you have to know. So you can make a note of this also, guys.
सिंपल सी बात है, एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है, राइट? Okay, so have you written that, guys? Okay, okay, Rajesh, no problem, note down, note down. So after you write, you can let me know, guys. We'll move forward with the next set of things. ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, मिसस्टेटमेंट मतलब लेमैन लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों आएगा? फ्रॉड या एरर से आएगा। लेकिन एसए 240 क्या डील करता है? ओनली फ्रॉड से ही डील करता है, राइट? ओके राजेश, ओके हर्षिता, चलो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके सी, अभी क्वेश्चन क्या है, देर आर सम टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स उन्होंने डिस्कस किया है। ओके तो पहले समझिए, बाद में लिखना है आपको, ठीक है? टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स उन्होंने डिस्कस किया है। क्या टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स है सर? देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स गाइस। Okay, see the first one, fraudulent financial reporting. Second one, misappropriation of assets. Fraudulent financial reporting and दूसरा क्या है? misappropriation of assets. Okay,
जब हम बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब क्या है सर? लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। सी, यहाँ पे फ्रॉड्स आर कमिटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। सिंपल में बोलना है तो फ्रॉड्स आर कमिटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से, यहाँ पे विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो, लेकिन सिंपल भाषा में मैंने लिखा है गाइस, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइस, योर अकाउंट्स पेपर टू बी फ्रैंक एनफ। तो फ्रॉड्स कहाँ पे कर रहे हैं आप? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलेंगे। लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स मतलब क्या है? यहाँ पे रॉन्ग यूसेज of entities assets for personal purpose। रॉन्ग यूसेज ऑफ एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल पर्पस मतलब एंटिटी के असेट अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। चलो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे गाइस। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बाद में इसको कॉपी करना है। ओके, डोंट बॉदर, यहीं पे रहेगा। ओके, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या है सर? सी फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना था लेकिन उन्होंने जानबूझ के फॉलो नहीं किया है। ओके, क्या वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनेगा? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग बना रहे हैं तब उन लोग गलती कर रहे हैं, है ना? तो तब उसमें क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अंडरस्टूड। अभी सेकंड थिंग क्या है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स मतलब रॉन्ग यूसेज ऑफ एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल पर्पस। एग्जांपल, चलो मान लेते हैं कंपनी का कार है, मैनेजिंग डायरेक्टर अपने पर्सनल ट्रिप के लिए उन्होंने यूज किया है, तो क्या वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स आ जाएगा? एब्सोल्युटली यस। ओके, फॉर एग्जांपल, कंपनी का एसी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने सोचा कंपनी में क्यों, मैं घर पे लगा देता हूँ, वो लेके घर पे लगा दिया। So tell me guys whether it's a misappropriation of assets or not? Absolutely yes. Okay, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरे एग्जाम्पल्स सोचिए जरा। ओके, लेट अस से मैनेजमेंट ने शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर्स देना था लेकिन डिस्क्लोजर्स नहीं दिया है। ओके, तो उस टाइम पे क्या पर्टिकुलर वो फ्रॉड है क्या? या बिकॉज ऑल दिस इज इंटेंशनली दे आर डूइंग, तो उस टाइम पे क्या है? सो इट इज अ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना? लाइक आई कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, लाइक इंटेंशनली ओमिटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। ओके, मतलब इंटेंशनली जानबूझ के वो लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे सो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना? सो अनदर केस, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस से द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि क्या हुआ है, एक ट्रांजैक्शन हुआ 1 लाख का, लेकिन जानबूझ के उसको सप्रेस किया है विथ रिस्पेक्ट टू 1 लाख ट्रांजैक्शन टू 10,000 ट्रांजैक्शन। ओके, 1 लाख का 10,000 में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, जानबूझ के, इंटेंशनली दे हैव डन। Now tell me guys whether that is also fraudulent financial reporting? Absolutely yes. Okay, तो मतलब क्या है यहाँ पे? You have to understand this clearly guys. It is nothing but fraudulent financial reporting। जो भी है फ्रॉड्स वो लोग बना रहे, कब बना रहे हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन लोग बना रहे हैं। ओके, सो अगर ऐसा है तो उसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलेंगे। अगर एंटिटी का असेट कोई पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो इट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। आई होप क्लैरिटी मिला है आपको। एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दैट? इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? ओके, चलो गुड हर्षिता। या गुड राजेश। चलो नाउ यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस, जो मैंने लिखा है ना, दिस यू कॉपी इट डाउन। ठीक है, इसको लिख देना, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों वो सब क्या है आपको यूज होने वाला है। ओके, इस सब आपको यूज होने वाला है डे बिफोर द एग्जाम, इवन प्रिपरेशन टाइम पे भी यही यूज होने वाला है। प्लीज समझ लिए बात को। या हर्षिता,
Yeah, Rajesh. Note down, note down. After you make a note, then let me know, guys. Okay. So have you written this, guys? Have you written this? If you have not written, don't worry, guys. Please make a note because ये सब important है आपके लिए. Okay, Harshita, no problem. Note it down. Note it down. Okay. So have you done this, guys? Okay, Harshita. Chalo. Others, have you done? Okay, Rajesh. Chalo.
See, now let's understand the next aspect. तो क्या है sir? See, types of frauds we have discussed. Okay, अभी इसके बाद there is one more thing what you have to know. What is that? Okay, see, they use a definition known as fraud risk factors. Fraud risk factors. What is this fraud risk factor, sir? एक क्या है sir fraud risk factor? See, it's something like this. Fraud risk factors मतलब I can say this is nothing but some situations या फिर conditions. It may be some situations, conditions, or it may be circumstances which gives incentives or which gives motivation or which pressurizes which pressurizes a person, okay, which pressurizes a person to do the fraud or provide an opportunity to do the fraud or provide an opportunity to do the fraud. So I'm repeating this, guys, so listen to this carefully. Fraud risk factors मतलब क्या है sir? It is nothing but a situation. Okay, it is nothing but a situation. I can say it is nothing but a condition. Okay, तो situation हो सकता है, condition हो सकता है, क्या दे रहा है सर, वो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है सर, वो किसी को मोटिवेट कर रहा है या किसी को इंसेंटिव दे रहा है या फिर किसी को प्रेशराइज कर रहा है। किस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं सर? टू डू द फ्रॉड मतलब मिल के फ्रॉड करेंगे, या टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डू द फ्रॉड मतलब तुम मत करो मैं तो करूंगा फ्रॉड। ओके, जस्ट टू बेसिकली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर ऐसा सिचुएशंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस? उसको हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बोलेंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या है? यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है, इट मे बी सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। उस सिचुएशंस या कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है? वहां पे सिंपल सी बात है, वहां पे क्या हो रहा है? इंसेंटिव्स किसी को दे रहे हैं या फिर किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं। किसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं आप? कि साथ में फ्रॉड करेंगे। टू डू द फ्रॉड मतलब टुगेदर वी विल डू द फ्रॉड, या फिर टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डू द फ्रॉड मतलब तुम मत करो लेकिन मैं तो करूंगा। ओके, तुम चुप बैठो। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल। ओके, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कॉर्पोरेट्स में। दिस इज बिकम्स नॉर्मली एक्चुअली विजिबल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमेशा फाइनेंस मैनेजर परचेज मैनेजर को प्रेशराइज कर सकता है। Okay, he can pressurize the purchase manager to select a particular supplier. Okay, क्यों? शायद वो supplier कमीशन दे रहा होगा। ओके, तो फाइनेंस मैनेजर क्या बोल सकता है? बोल सकता है भाई जो भी कमीशन मिलता आधा आधा बांट लेंगे। ओके, तो बात नहीं सुन रहे तो परचेज मैनेजर का कमीशन और बढ़ा देता है। तो देखो, इंसेंटिव मोटिवेट कर रहा है वो। ओके, किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है? नॉट फॉर राइटिंग एग्जाम्स गाइस, दे आर मोटिवेटिंग टू डू द फ्रॉड। है ना? तो एज सिंपल एज इज। सो प्लीज अंडरस्टैंड यार, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब वो एक सिचुएशन है, कंडीशन है जो प्रेशराइज कर रहा है या किसी को मोटिवेट कर रहा है टू बेसिकली डू द फ्रॉड या प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डू द फ्रॉड। बात क्लियर है सबको? इज इट फाइन एवरीवन? ओके, इफ यस लेट मी नो गाइस। या चलो, गुड। सो यू कैन मेक ए नोट ऑफ दिस नाउ। पहले लिख लो इसको, है ना?
once you make a note, तो I will scroll down guys. ठीक है. Okay, so have you done this guys? Have you written? I have scrolled down also. Okay. So let me know guys once you have written, then I will take up one MCQ on this. एक MCQ डिस्कस कर लेंगे. हर्षिता डन. ओके हर्षिता गुड. चलो. सो एक MCQ हम डिस्कस कर देंगे इसके ऊपर. ठीक है. ओके. चलो राजेश गुड.
Okay, so MCQ, just now I have made a note of it, guys. So first you can copy it now. Okay, problem nahi hai. You can think and you can tell the answer, guys. Okay. Okay, so you can make a note of this and उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं. फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ICA, नॉर्मली केस स्टडी के ऊपर भी इसी पॉइंट को पूछा जा सकता है. ओके, तो आपको हमेशा ये पॉइंट को याद रखना है. मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बाद में, तो इसको आप कॉपी करने के बाद आप आंसर बोल सकते हैं. Okay, so if you have copied, you can let me know the answer, guys. तो क्या लगता है आपको आंसर बोल सकते हैं? Harshita says answer is option B, sir. Okay, okay, Harshita. Rajesh also says B, sir. Okay, Rajesh. चलो. See, I think what you have said is absolutely right actually. तो यहाँ पे क्या है? So option B is the right answer. ठीक है? See, यहाँ पे situation क्या है? पहले वो समझ लो. वो क्या बोल रहा है? Every fraud risk factor indicates that there will be a fraud.
अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो क्या इसका मतलब गारंटी है क्या क्या उसी में फ्रॉड रहेगा ही रहेगा? नो। सी फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मोटिवेट करो, आप किसी को इंसेंटिव्स दो या फिर किसी को प्रेशराइज करो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंपलसरी फ्रॉड में इन्वॉल्व ही होना है। ओके अगर उसको लगता है तो ही कैन रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटीज, है ना? या फिर वो कंपनी को छोड़ के भी जा सकता है। तो इट्स एज सिंपल एज दिस। तो हमेशा याद रखो गाइस, यहाँ पे तो क्या होता है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्रॉड हमेशा होगा ही होगा। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं देर विल बी ए फ्रॉड, नो देर इट मे बी ए फ्रॉड। ओके मतलब देर मे बी ए फ्रॉड बट इट्स नॉट ए गारंटी दैट देर विल बी ए फ्रॉड। ठीक है बात सबको? ओके फ्रॉड हमेशा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे प्लीज आप समझ लिए बात को। ओके सो देर इज नो गारंटी दैट देर विल बी अ फ्रॉड। फ्रॉड हमेशा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बात समझ में आया अब तक? ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। ठीक है? okay so this is basically what guys, so almost like I can say 70% of essay 240। लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ और भी कवर करना है, कांट से 70 बट हाँ चलो आधा तो बोल सकता हूँ मैं। तो 50% ऑफ essay 240। ओके तो कल के क्लास में हम क्या करेंगे, तो वी विल टेक अप विथ रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग पार्ट। अगर इन केस ब्लर नहीं दिख रहा है तो हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट पार्ट। इज इट फाइन? चलो जितना हुआ है आज तक प्लीज़ रिवाइज कर लो घर पे। कल के क्लास में हम फिर मिलेंगे, कल इवनिंग 6 o'clock है, राइट? ओके चलो गाइस देन टेक केयर। या माय प्लेजर हर्षिता। या टेक केयर। या हैव ए नाइस डे। या बाय राजेश। या माय प्लेजर राजेश।